अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। ये अभियान युवा उद्यमियों को समर्पित है, जिन्होंने नए स्वप्नों को वास्तविकता में बदलने की सामर्थ्य दिखाई है, और स्टार्टअप इंडिया अभियान के माध्यम से युवा उद्यमियों की उम्मीदों को एक नई शुरुआत देने की पहल की जा रही है। यह अभियान उन्हें अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करने में मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। Good evening and welcome to Vigyan Bhavan, New Delhi. Can India become the startup capital of the world? This was a question raised by Prime Minister Narendra Modi, and then slowly a dream started taking shape. Today, the 16th of January 2016, marks the first step in ensuring that what we dare to dream does become reality. Prime Minister Narendra Modi will, in a short while from now, formally launch the ambitious and much-needed government intervention to nurture and ensure the growth of entrepreneurship in India. The Startup India, Stand Up India initiative is not just about the IT or digital world, but an effort to assist people starting new business ventures, especially those that are involved in innovation. The unveiling of a work plan on the Startup India, Stand Up India program today may well aim to build an ecosystem to suit domestic conditions, but that doesn't stop the government from letting local entrepreneurs draw lessons from the world's best developed entrepreneurial experiences, including Silicon Valley. And today here we have people from across the world who have come here, many of them Indian entrepreneurs. There is a wonderful exhibition which has been organized, and you're seeing shots of that right now. Very technical, very techno-savvy, and all indicating the amount of investment that is available in the world, the amount of belief that people across and Indian investors across the world have in entrepreneurship, and how India is just ready and ripe with the youngest population in the world waiting to reap a demographic dividend on the threshold of a startup revolution. इस प्रदर्शनी के माध्यम से साहसिकों के द्वारा, स्टार्टअप्स के द्वारा की गई नई पहल और प्रयोगों को दिखाने का प्रयास किया गया है। महिलाओं का कार्य भी दर्शाया गया है। महिला उद्यमियों की भी इसमें प्रभावशाली और प्रभावकारी भूमिका है। कुछ ही समय के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा। पहले वे प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और उसके बाद bubble of the US. But look at the fundamentals. They're completely different. Consumers are starting to pay online. Paytm is here and they can vouch for that. Flipkart's here, they can tell you that people are buying online. There are more and more phones being sold every day, day in and day out. I don't know what the latest number is, but somebody told me that we are close to 150, 160 million smartphones with close to 1 billion phones. Those number of smartphones are going to go up. People are going to get to connectivity. Probably about 500 million is what Sachin you said. 500 million more people will come online. All of these things are reality. And if that reality is there, then let it be bubble, because hopefully they will create 25 more big companies. 3 of them might go away, but that's net positive for the country. It's amazing, Naveen. This is so similar to my views about the same. I know I was called here to talk about hotels and startups, and it's not my forte to talk about countries, but I'll draw a very interesting similarity. If you see countries across the world, the most successful countries are the ones that have gone through a major casualty. US went through the civil war, after which it recovered and built a brilliant country around it, Japan, and multiple other situations. I think for me personally, if India is in a bubble, and I hope it is in a bubble like Naveen says, and it goes through casualty, that will be the real trust, real check of character and guts in we entrepreneurs who are building companies in here. And if we can survive and build amazing companies, India will possibly become equal or more successful than all of these countries that went through casualties. So I think that's my personal belief. Whether we are in a bubble or not, of course, the future will tell us. But I think all of us who've gone through many different cycles over the years, we recognize that there is a pattern.
that funding comes and funding goes, and those that are able to raise capital and run, as Radhika was saying, a frugal business model, so that when the winter comes, they are able to survive. I think that's the takeaway, that everybody has around these funding cycles. And so one day, the kind of funding that we are getting right now is certainly going to diminish. And at that point, if you don't have the cash to be able to get through to the point where you're cash positive, that's going to make things very, very difficult for you. So that is a lesson that I think all of us who've survived multiple of these funding cycles have learned. So that's the word of caution that I would have. But Naveen, please add. I think you're absolutely right. I think if people confuse the bubble with saying we will spend a lot more money to build the same kind of a business, that's stupidity. Like, there's no other word for that. And I think if that starts to happen, and that may happen because of the bubble, that is effectively what causes the bubble. It's not if people remain to the fundamentals of the business, you'll actually amazingly build big businesses because there is a bubble. Excellent. Now let's turn to the third question, which is, would you list your business in India? That is, when you go for an IPO, when you go out and get a public listing, would you be willing to list in India, or would you be looking in New York or Singapore or some other market? Jayant, that would all depend on what we hear at 6 o'clock, whether we'd be able to repatriate those funds to our... But jokes apart, of course, I mean, we are proud people of Indian origin, and if we had a chance, we of course would list our companies in India as well. Thank you. Totally agree with Arun. If the policies are right, India is the place for us. Our business is completely centered around India, and it would make no sense for us to go out of the country. Yeah, I think right now, as we stand, I think India's markets need to be upgraded quite a bit to be able to attract, to be able to raise large amount of funds. I think apart from that, absolutely, I think we would love to raise funds in India from the public market. Reason being that we are in India, and the retail investors or the investors here will understand our business much more than anybody else, and will understand the value of our business in the local context much more than anybody else. I think absolutely India is definitely our top choice. Well, thank you for that. But Sachin, one of the factors that you will certainly be thinking about, and I think we will be thinking about from a market regulator and policymaker's perspective, is if indeed you list at, let's say, $20 or $25 billion market capitalization. You have to remember that the largest listed Indian internet company today, Naveen, you probably know as well, is InfoEdge, I presume. Yeah. And InfoEdge is a market cap of about $2 or $3 billion. Yeah. So right now, for our markets to absorb a $20-25 billion market cap internet company is a real question. Yeah. As well. No, I think that's a real question, and it will require policy. It will require. I'm not sure that it would require policy as much as investors on the other side. No, I think another aspect I think I would like to point out is that it may not be actually bad thing if a lot of foreign money comes because of companies like Flipkart or others actually listing outside of India as well. I think somebody once told me that we are not going to get rich if we keep trading among ourselves. We need to be able to attract foreign capital as well. So maybe the answer to our current account issues might very well be a listing of Flipkart and have them attract $5 or $10 billion worth of foreign capital. Absolutely. Shri, I have a short point. You took my point away, both consultants sitting next to each other. So I think the problem here could be that the kind of growth they have and the kind of valuations they have, and can that kind of money come in only from India? Can the local market absorb that requirement? But having said that, the positive is that these are the people who use these services. I mean, we all would have put in money into companies where we have not used services. But the benefit of this overall entrepreneurship ecosystem is that the people who are going to buy their stock know these companies as their service providers. So that could be another angle why they could consider listing here. But the challenge is what you said very, very aptly is a big challenge, which I personally feel.
Jen, this is the one where there is a huge dichotomy. Um, the way things stand currently, there is it's I think it's close to impossible to list in India. Um but the dichotomy is because of the fact that you belong to India and that you've built a company in India or from India. That creates a huge emotional component to trying to list in India. The, the point around whether the markets are ready in India or not is clearly a valid point, and I don't think it's ready right now. I don't think it'll be able to absorb a number of internet companies that might go public in India, over the next 5 years or so. And therefore, foreign money coming into India may not be such a bad option. No, I think you're right, Naveen. I think if indeed some of our landmark signature unicorns, for instance, were to consider listing in India, and of course we'd be prepared and willing to work with you all to find out what the issues and challenges are and try and overcome them. As you know, SEBI recently did quite a bit to streamline and simplify the listing norms for startups. But if there's more to be done, of course we do that. But at the same time, having companies like yours and Sachin's list would also be a real booster shot for our equity markets as well. So while I was being half facetious about the current account deficit and attracting foreign capital, it's almost as important for us to attract more domestic capital in the equity markets as well. And the kind of excitement and energy that will come into our markets when companies like the ones that are on this dais talk about a listing in India would, I think, really be very, very positive for our country. So आपने कहा कि आप देशभक्त हैं, तो मैं उस देशभक्ति का थोड़ा फायदा भी उठाना चाहता हूँ. देश के लिए भी आप लोग कुछ करिएगा तो बहुत बहुत हम लोगों के लिए लाभदायक होगा. Ritesh. Great points, Jayant. I think I have two views there. One view is, like Son-san said earlier, that there's no hurry. We still have a long way to go. Our country is going to see significant growth in the infrastructure that needs to be created in hospitality. So I think still a long way to go for that. But for me, I would personally love to list in India. Of course, there are questions of policy, equity markets, FIIs, all sorts of things, which I think I don't understand a lot about. But I think in general, the only reason why I will feel very excited about it is because the consumers who have fallen in love with our brand, the hotel owners who are making a lot of money with us, I would like them to own shares of OYO. And for them to subscribe to the shares, it's the easiest if it's listed in India. So I think I would personally want that and would love to work at relevant point of time with the relevant authorities to figure out how to do it. Excellent. Well, thank you. We, I believe, still have another 5 minutes.
नमस्कार। विज्ञान भवन के भव्य प्लीनरी हॉल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज यहाँ एक विशेष समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। ये अभियान युवा उद्यमियों को समर्पित है, जिन्होंने नए सपनों को हकीकत में बदलने की सामर्थ्य दिखाई है। स्टार्टअप इंडिया माध्यम से युवा उद्यमियों की उम्मीदों को एक नई शुरुआत देने की पहल की जा रही है। ये अभियान उन्हें अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करने में मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। Good evening and welcome to Vigyan Bhavan, New Delhi. Can India become the startup capital of the world? This was a question raised by Prime Minister Narendra Modi, and then slowly a dream started taking shape. Today, the 16th of January 2016, marks the first step in ensuring that what we dare to dream does become reality. Prime Minister Narendra Modi will, in a short while from now, formally launch the ambitious and much-needed government intervention to nurture and ensure the growth of entrepreneurship in India. The Startup India, Stand Up India initiative is not just about the IT or digital world, but an effort to assist people starting new business ventures, especially those that are involved with innovation. The unveiling of a work plan on the Startup India, Stand Up India program today may well aim to build an ecosystem. An exhibition has also been organized at the venue here, a high-tech display of what all has been achieved in various fields. स्टार्टअप इंडिया अभियान के प्रमुख अंग के तौर पर कुछ साहसिकों के स्टार्टअप्स के द्वारा की गई नई पहल और नए प्रयोगों को दिखाने के लिए एक प्रदर्शनी का भी आज आयोजन किया गया है। महिलाओं के कार्य को भी इसमें दर्शाया गया है। महिला उद्यमियों की भी इसमें प्रभावशाली और प्रभावकारी भूमिका है। भारत को नवीन प्रयोगों का राष्ट्र बनाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य, और प्रदर्शनी में इस बात को प्रदर्शित करने का एक कामयाब प्रयास हुआ है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत अनेकों क्षेत्रों में समुचित प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। The demographics of India are changing, and so are the needs of its population. And today, as we sit at the threshold of wanting to reap a demographic dividend, we need to turn into a nation of employment providers rather than employment seekers. And as we await this huge opportunity, it's important that a conducive environment for ensuring that investment and the climate, the laws and bureaucracy favors the setting up of new enterprises is put into place. And while we may well aim to build an ecosystem to suit domestic conditions, but that does not stop the government from letting local entrepreneurs draw lessons from the world's best developed entrepreneurial experiences, including the Silicon Valley. The Startup India, Stand Up India is a new initiative that Prime Minister Narendra Modi, he spoke about this during his Independence Day speech last year, and it is being seen as the government's New Year gift to young people who want to set up new businesses or innovative projects. In fact, today's event will see the participation of all major higher educational institutions through online, that is the IITs, IIMs, central universities, NITs and other institutions, and they will be connected live to the launch of the event. स्टार्टअप इंडिया अभियान के शुरुआत में जिस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, उसमें इस अभियान में जो अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं उनकी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। सौर ऊर्जा उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, अंतरिक्ष विज्ञान, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष तौर पर कृषि में उन्नत तकनीक का उपयोग, समुद्री संपदा, खनिज संपदा का समुचित दोहन और उससे भी बढ़कर इसका उचित इस्तेमाल, ऐसे कुछ अहम क्षेत्र हैं जिनमें स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और उसे ही इस प्रदर्शनी में दर्शाने का प्रयास किया गया है।
According to the World Bank's Doing Business Report 2016, India moved up 9 spots in the starting a business category to 155. But at the same time, it slipped 6 spots in terms of ease of accessing credit to 42. And this implied that it has become more difficult to get loans in India, especially for startups and the medium and small scale enterprises. And this is precisely the gap that this initiative, Startup India, Stand Up India, seeks to address. स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप्स और यंग साहसिकों का सम्मेलन है और बहुत से विदेशी और भारतीय युवा उद्यमी आज इसमें शामिल हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन, जो आज स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ करेंगे। Prime Minister Narendra Modi arriving here at Vigyan Bhavan to formally launch Startup India, Stand Up India. His dream, his vision, formally being launched today to make India self-reliant, young, progressive and innovative. We just showed you shots of the exhibition. The Prime Minister will go to the exhibition and take a round of that place. It's truly an impressive display of technology, vision, mission, and passion. भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए उद्यमों के लिए धन और ऋण की उपलब्धता, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में सुधार, ये सभी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। स्टार्टअप इंडिया अभियान का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है विदेशों के बजाय देश में ही संभावनाओं को तलाशना और उन्हें मूर्त रूप देना, और इसके लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण यकीनन अपेक्षित स्तर तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए साथ में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, श्रीमती निर्मला सीतारमण, बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शनी, और इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली से भी कई उद्यमियों का आगमन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसकी जानकारी और खास तौर पर उद्यमियों को सरल और उनका कम समय लगे उनके उद्योगों को आगे बढ़ाने में इसके प्रयास किए जाने की व्यवस्था। Prime Minister Narendra Modi taking a look at the exhibition. According to a NASSCOM report titled Startup India, Momentous Rise of the Indian Startup Ecosystem, India has emerged as the youngest startup nation in the world, with over 72% of founders being less than 35 years old. And the country has more than 4,200 startups, making it the third largest startup base worldwide. In order to foster innovation and support entrepreneurship, NASSCOM has been closely partnering with the government in various entrepreneurship-led initiatives. And in line with the Prime Minister's vision of
making India a hub for cyber security, related research, training and products. Organizations have created a cyber security task force last year. स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मंत्रालय के सचिव श्री अमिताभ कांत, साथ में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। भारत एक युवा देश है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि हमारे देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और सही अर्थों में यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी पूंजी है। युवा उद्यमियों को हर तरीके से बढ़ावा देना स्टार्टअप इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य, जिसे इस प्रदर्शनी में अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही सार्थक पहल के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री उसकी जानकारी प्राप्त करते हुए विशेषज्ञों से मैंने कहीं देखा किसी बच्चे ने शूज में किए, जूतों में। जी सर। In fact, this event is aimed at celebrating the entrepreneurship spirit of the country's youth and is being attended by CEOs and founders of top startups, over 1,500 from across the country. First generation entrepreneurs, CEOs of well-established startups, investors and innovators from India and abroad have gathered here to bring together domain expertise and business lessons from their entrepreneurial journeys. And as most of us know, entrepreneurial journeys are fraught with the risk of failure. To treat failure as an enabler for future success is critical for us to be able to create a nurturing ecosystem for enterprise development. Today, all that you see here, all that is being exhibited, has been through many cycles of failure for this success to be achieved. In fact, for an economy to make the move from being service providers to be creativity and innovation driven, the focus on job creation through entrepreneurship has to be made. India's demographics are changing, so are the requirements. And it is also important to deeply reflect on how our education system sees the recognition and nourishing of entrepreneurial spirit. Young people are naturally experimentative in nature, and often in the name of career security, this is sacrificed. Most of us then tend to become job seekers rather than job creators. But it is in the ambit of the latter that the solution to unemployment lies. स्टार्टअप इंडिया अभियान का उद्देश्य हमारे देश में उपलब्ध अपार युवा शक्ति को सार्थक वातावरण प्रदान करना और उन्हें स्वयं के और समाज के कल्याण के साथ देश की प्रगति और कल्याण के लिए प्रेरित करना और इन सब के लिए उचित वातावरण प्रदान करना है। इसी दिशा में अलग अलग मंत्रालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, उनकी एक झलक आज स्टार्टअप इंडिया अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करने का सफल प्रयास हुआ है, जिसकी जानकारी लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी The Prime Minister being made familiar with the progress and development made in various sectors, taking a keen interest, accompanied by Finance Minister Mr. Arun Jetley. In fact, this event has been a non-stop, day-long global workshop on startup entrepreneurship and included panel discussions on topics such as unleashing entrepreneurship and innovation, what do Indian startups need to grow and prosper, celebrating women, stories of innovative women entrepreneurs, how digitization will change India's future, making Indian healthcare leapfrog, and financial inclusion is within reach.
In fact, the panel discussion on Show Me the Money, How Do We Capitalize Entrepreneurship was chaired by Minister of State for Finance, Jayant Sinha. आज का ये कार्यक्रम दरअसल देश के चुनिंदा युवा साहसिकों का सम्मेलन है, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कोने-कोने में अपनी प्रतिभा का और अपने कौशल का परिचय देते हुए सफलताएं अर्जित की हैं। इस कार्यक्रम से देश के विभिन्न भारतीय तकनीकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नेहरू युवा केंद्र और एनसीसी केंद्र भी जुड़े हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे अभिनव प्रयोग समावेशी विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का अभियान, उसी का अंग है स्टार्टअप इंडिया अभियान। इसकी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। देश और दुनिया से आए तमाम युवा उद्यमियों के लिए एक बेहद गौरवशाली क्षण, जब उनकी परिकल्पनाओं और उनके स्वप्न मूर्त रूप लेने की ओर अग्रसर हैं। अभियान का नाम स्टार्टअप इंडिया। Along with the Startup India, there's of course the Stand Up India scheme, which will promote entrepreneurship among scheduled caste and scheduled tribe women entrepreneurs. The scheme is intended to facilitate at least 2 such projects per bank branch. In fact, banks are playing a very, very important role in the implementation of these schemes, including credit and borrowings. On an average, 1 for each category of entrepreneur, and it is expected to benefit at least 2.5 lakh borrowers. The expected date of reaching the target of at least 2.5 lakh approvals is 36 months from the launch of the scheme. Refinance through single windows, creation of a credit guarantee mechanism, hand-holding support for borrowers, with a focus on hand-holding support for SC, ST and women borrowers, to leverage institutional credit structures to reach out to these underserved sectors. All these are critical roles to be played by this scheme. This initiative, expected to encourage entrepreneurship among the youth in India, is being keenly awaited by a complete generation that has new ideas and is waiting for creativity to be appreciated beyond paper, to be appreciated in the realm of commerce and industry. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी युवा उद्यमियों के प्रयासों की सराहना करते हुए एक विशाल एलईडी स्क्रीन पर उद्यमियों का जो प्रयास है उसे प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे नवोन्मेषी कार्य। आज जब सारा विश्व भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, स्टार्टअप इंडिया अभियान नए साल में इन सभी युवाओं के लिए एक अनोखा अवसर प्रदान करेगा। युवा महिला उद्यमियों से बातचीत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बेहद खास मौका। And it is through these young entrepreneurs that India is slowly moving towards a knowledge-based economy, and this will provide strength
to many sectors. These initiatives can revolutionize the healthcare system, farming methodologies, and the education improvement. And at the same time, focusing on startups will enrich local ecosystems and aid Tier 2 and Tier 3 cities as well as rural areas in reaching self-sustaining capacity. Prime Minister Narendra Modi interacting with young entrepreneurs, and very encouraging and important day for them as they meet somebody who has envisioned a technology-savvy future, a future which they can call their own, and it is in the implementation of this scheme that its success is going to be determined. युवा वर्ग की शक्ति के सही दिशा में केंद्रित होने से देश का कोना कोना लाभान्वित हो सकता है। समावेशी विकास को गति प्रदान करने में स्टार्टअप इंडिया अभियान एक अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सभी आवश्यकताओं की निर्बाध रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करना, युवा उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी युवा उद्यमियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनसे बातचीत करके उनके प्रयासों के बारे में जानकारी लेकर के और यकीनन इन सभी के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत का काम करने में सक्षम। So when the vision is big, the intent good, expectations are always high. And yes, they are high from this initiative too. The expectations are that the government will encourage domestic and angel investments in startups by aligning capital gains tax slabs effectively on publicly traded shares to angel and venture capital funds, the incubation of startups, which comprises mentoring, access to funding, other reliable resources like marketing professionals, HR professionals. Well, help is expected there also. The support is that a majority of startups have emphasized the easing of availing capitals from banks and other financial institutions, investment in schools and colleges, a focus on skill development, increased spending on infrastructure, including roads and round-the-clock electricity, labor reforms, introduction of e-filing facilities, reforms in the banking sector. The list is long. And of course, there is the energy, there is the drive, and there is the will, because this is a nation that is wanting to fly aspirationally and regionally, wanting to take on a leadership role. Assured production which is there for the next 10 years, and the kind of jobs which it can create. You have a complete ecosystem. So you start with the OEM, which is primarily now assembler, and the OEM goes to tier 1 suppliers. There are about 20 to 50 tier 1 suppliers. Tier 1 suppliers is tier Strong amendments in the area of policy implementation will be more pertinent for India at this stage, and moreover the creation of an open and safe environment for the development of infrastructure can also strengthen the pillars of startups. The need of the hour is to come good with the promises that have been made on boosting enablers such as logistics, infrastructure and rural connectivity. The time is ripe for India to pick up on its momentum, with other countries in the BRICS categories struggling with their growth stories. Now is the time for India to stand out and become an economic powerhouse in its own right. And now that place is a vibrant place for aerospace. Prime Minister Narendra Modi at the exhibition And I think Startup India, Stand Up India here in Vigyan Bhavan, New Delhi, just outside the plenary hall. So this is our sector. We have an impeller which we have in our. This is a turbine blade which is there. आज की ये प्रदर्शनी इस बात का परिचायक So we have industry partners. Boeing is हमारे there, देश के Shell is there, युवाओं की and then there are several other industry कोई partners. कमी नहीं है। साथ ही उनमें हिम्मत की भी
आवश्यकता भी नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे युवा उद्यमियों का उत्साहवर्धन करते हुए आज आवश्यकता है युवा उद्यमियों की ऊर्जा को रचनात्मकता प्रदान करने की, उसे सही दिशा में केंद्रित करने की, और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम इस दिशा में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने में सक्षम है। कुछ ही क्षणों के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्लेनरी हॉल में आगमन होगा, जहां वो विधिवत रूप से स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ करेंगे। This is a view of the plenary hall, which awaits the arrival of Prime Minister Narendra Modi in a short while from now, who, after going around the exhibition just outside this hall, will be coming in. And here we have CEOs of well-established startups, investors, innovators from India and abroad, all gathered here. They've been in sessions since the morning. For this day, it's been an action-packed day for them, and now they await the arrival of Prime Minister Narendra Modi, who will now formally launch the initiative. The hall packed to capacity, the elegant and beautiful plenary hall. Applause now, greeting the arrival of Prime Minister Narendra Modi. Stand up India, start up India. The world is waiting. Honorable Prime Minister of India, Honorable Finance Minister, Honorable Minister for Commerce and Industry, all the Honorable Ministers, the Vice Chairman of the Niti Aayog, all the startups who are here from abroad and from India, all our friends who've come all the way from Silicon Valley, distinguished guests, ladies and gentlemen. From 9 a.m. in the morning, this room has seen immense amount of energy. It's seen huge vibrancy. It's seen the kind of dynamism which I have not seen in my 38 years of my career. Sir, this room today is in many ways the foundation of a completely new India. Everyone here, and sir, you would realize that we don't have any established businessmen here. These are all startups here. And sir, they have decided not to take the easy route. They took the path totally uncharted. They walked alone, or at times with a few friends, just with an idea and the determination to change the world. And the world, they have totally changed, sir, here. And we must realize, sir, that India has changed and is changing rapidly, and it's a totally different and a completely new India. Sir, this new India will be on the basis of India's growth, India's success, and the success of prosperity of many of the new schemes that you have launched. Sir, this new India will be founded on the basis of risk takers, a nation that will celebrate risks, that will celebrate struggles, that will celebrate hardships and successes, and work on failures to make a better tomorrow. So with these few words, sir, I'll request the Honorable Minister for Commerce and Industry to give her welcome address.
Respected Prime Minister, respected Finance Minister, the august panelists on the dais, the startups who have come here to inspire us from the Silicon Valley, the Indian startups, and all the invited audience. Today has been an exceptional day. Yes, the Prime Minister had spoken about Startup India on August the 15th. But today is the day when actual engagement is happening with you directly, with the Finance Minister inaugurating this morning's session. And after that, it's been just a lot of live wire discussion that which showed that there's so much of connect between the audience and the panelists, the peers who have come here to show us the way, and those who are revving to drive. India is the place, has been the message since the morning. We from Government of India are just ensuring we understand the Prime Minister's dream, the peers who have given us the message, and the startup young minds, the innovators, the stakeholders, the investors, the angel investors who've already chipped in a lot of their funds, and all who are eager to move with us just facilitating. I welcome all of you all. I've been here the whole day. I must say, Honorable Prime Minister, it has been one of the fascinating day-long discussion on what the startups can do for India if only the government understands them. The message was loud and clear, and I'm sure you've understood them long before. And you have a message. You've been speaking much about it, and therefore, today, the audience is waiting to hear more from you on your dreams of how you envisage India's future with the startups being the engine for the growth. I welcome all of you all, and in fact, it's been a great day with a lot of ideas exchanged. We are here now to hear the Prime Minister. With these few words, I thank all of you all for this wonderfully dynamic and invigorating day. Thank you very much. Sir, since morning, we've had sessions on 21st century calling, why is innovation important for India? We've had a session on fostering the spirit of innovation. We've had a face-to-face, a very lively session with all the secretaries to Government of India who faced direct questions from all the startups. Sir, we had a session on freelancers and early-stage startups, the ecosystem required. We had a session on unleashing entrepreneurship and innovation. What do Indian startups need to grow and prosper? We had a session on celebrating women's stories of innovative women entrepreneurs. We had a session on how digitization will change India's future, on making India a healthcare leapfrog. One on inspirations from Silicon Valley. There was a very interesting session by Google, which did a launch pad, and two unique presentations, one funding from Google. So we had a presentation by Mr. Travis Kalanick on 8 lessons to entrepreneurs. Earlier, sir, we had a very interesting presentation from Mr. Masayoshi Son. So we had a panel discussion on disruptive power of technology in financial inclusion. We had a session by we had a very, very interesting session from Mr. Adam Newman, the founder of WeWork. We had an interactive question-answer session with Mr. Nikesh Arora. And sir, lastly, we had a session on how, show me the money, how do we capitalize entrepreneurship. Sir, this has been broadly the report of today's session, sir. Sir, all these startups have brilliant ideas which are very close to your heart in many ways. The entire journey of a startup is a celebration, starting from conceiving an idea till it is accepted by the world. So we would like to take you through the journey through the eyes of a startup. This is a small video prepared by a startup.
Sir, the Honorable Finance Minister had inaugurated today's morning session. He's been a source of inspiration and motivation to us, sir. May I request him to give his views and remarks. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my colleague Srimati Nirmala Sitharaman, Shri Amitabh Kant, distinguished persons on the dais, ministers, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Prime Minister, sir, today indeed has been a fascinating experience for this country. It represents not only the changing social profile of India and probably a future economic and business profile, it also marks a very important change in the mindsets of India. In the morning when the conference and the day-long sessions were inaugurated, I had mentioned that facilitating startups and literally creating a large explosion of activity represents the freedom from day-to-day state interference. The state creates the ecosystem, the state creates the environment in which people can function, and people should function. The only subsequent relationship with the startups is that at the end of the year they pay their taxes, continue to earn more, and enrich the Indian state and enrich themselves. In one sense, this culture in the last few years has already entered India. And I think a major milestone which really enables us to answer this question is, how many amongst the first 30 or 40 top companies in India, which existed as the top companies before 1991, still find a place in the top 20 or 30? They've actually been replaced by people who in some small or large measure were startups themselves. They didn't belong to business families, they didn't belong to dynasties, they didn't have the benefit of large capital at their disposal. They benefited from
the expanded scope of education in India. They carved out new areas for themselves and excelled. And I think if somebody were to do a serious study of the pre-91 business leaders and those who emerged post that period, we'll actually learn the story of how in an unregulated environment, it's the survival of the fittest that matters. And that is really the environment which we are creating today. The world today has changed. The limitations and the inbuilt limitations of the conventional economy repeatedly come and stare at us. They stared at us in 2008, they're staring at us in 2016. And therefore, we are all looking for alternate avenues itself. And the startups, on the strength of their innovation, on the strength of their ideas, on the strength of technology, have actually given the world new solutions. That the largest retailer in the world doesn't own a store. The largest transport company in the world doesn't own a vehicle. That's the power of technology, and that's really the power of startups itself. And therefore, from education to health to poverty eradication to the transportation systems and to various solutions which we are trying to look, I think solution lies with somebody sitting in this audience today. In one sense, the kind of changes which are taking place in the Indian political system itself, even there is a stark similarity. There was an era we lived in where surnames did matter, today they don't. And therefore, across the board we find the power of startups from business to technology to politics itself. And I'm quite certain that this conference is the beginning, or at least the continuation of a process which started. It will accelerate it further and bring, under your inspiring leadership, a much better future for people in this country. I thank you very much, sir. So our next speaker is the biggest risk taker in the world. He's the CEO who lost 70 billion in a day before conquering the world. After losing 70 billion, sir, he was able to buy SoftBank from Vodafone and later acquire one of the US Big Three network, Sprint. Mr. Masayoshi Son, founder and CEO of SoftBank, an entrepreneur, a turnaround operator, and an investor. In his words, India will race past US in 25 years. I'm saying it with money, not words. Mr. Masayoshi Son. Thank you very much for opportunity that I can speak for you. 20 years ago, I was so excited about the internet opportunity in the state. That was my first wave. Second wave was China 10 years ago. Today, I feel this big third wave of opportunity. I have a strong feeling that sometime 10 years, 15 years from now, despite the shaking situation of China, they may have opportunity to surpass United States in the size of GDP. After that,
25, 30 years from now, I have a feeling this country may surpass all of the other countries, become number one in the world. Sitting down whole day today, that made me believe from my guts. Thank you for this opportunity, and I really would like to support the success of India. Me, myself, SoftBank, together with Nikesh, I will support. Thank you very much. From creating the first indigenous humanoid robots in India to making headlines as the top innovator startup of 2015, Mr. Samay Kohli is heading Grey Orange, India's hottest venture in the warehouse automation space. Mr. Samay Kohli. Thank you. Honorable Prime Minister Modi ji, distinguished ministers and officials, my fellow entrepreneurs, their investors, ladies and gentlemen, thank you for this opportunity. I'm Samay from a company called Grey Orange. We are into the warehouse automation space. We are engineers from BITS Pilani right here. At the time of graduation, we were trying to look for a company where we could build products and build hardware right here in India, or our job offers were from the US and South Korea. And I guess because we didn't find any company, we ended up starting Grey Orange at that time. That's our reason for starting up. Today, what we do is we are a 400-strong people company which concentrates on R&D for building robots for the supply chain and logistics industry. We strongly believe that supply chain and logistics is probably one of the most deprived industries in terms of innovation and disruption. And that's why we are trying to introduce robotic products and other products for this industry. Because I believe this is one of the only industries which can be the single largest activator of growth, because that's what I think brought China to the next level, and this is what will bring India to the next level of enabling supply chain and logistics. We proudly are probably one of the few companies which manufactures in India. We have a 3 lakh square feet manufacturing facility in Gurgaon. We supply about 4 to 5 countries outside India today. So, and we often get asked the question of how does India end up building robots and start supplying them. So I think that's something unique that we do. I would like to say that we proudly believe in Modi ji's Make in India, and that's why we believe we'll be one of the biggest industrial robots companies from India. Thank you. Passionate about building consumer technology products, Suchi Mukherjee, founder and CEO, LimeRoad, has been selected as Global Leaders Under 40 by the World's Women's Forum. LimeRoad is India's first social visual web platform with some of the highest engagement metrics on social platforms. Suchi Mukherjee. Prime Minister Modi ji, and all of you. You know, 17 years ago, I, as a middle-class woman, girl, left India on a scholarship to study at Cambridge. A scholarship that without which I would have never managed to go. And the reality is, at that point, I never thought I would be building a business of my own. I came from a Bengali family, and you did not build businesses because it was just hard. 3 years ago, I came back to India. And when I told my mother that I was going to start a business here, she said a single word in Bengali, which many of you will understand, Shorbonash. And you know why? Because for her, the reality was the reality I saw when I left India. But this is the reality.
Modi ji, I personally thank you for making this happen, because with this one event, I think you have enabled a lot of middle-class men and women like me to dream more and to make their dreams a reality. And that is no mean feat. I've lived in London for 17 years. I've been part of 3 very large consumer technology businesses which I helped build. And frankly, while I was there, we kept complaining that London was not an internet hub and a startup hub, but I never saw any government ever do anything for the startup community as you have done. I am going to encourage and take one more minute and encourage every woman in this country to stand up and dream. Because when you build a startup, you not only make your dream a reality, but like LimeRoad, you get to create thousands, millions of startups. We have enabled women to build stores from their bedrooms in 60 seconds on their mobile phone. We have enabled women who've seen their mothers stitch and sew, create and become a stylist in 60 seconds while their children sat next to them and did their homework. You can do that. You can build the next million women entrepreneurs. I want every woman to stand up and make that happen, and of course the men too. Thank you so much. Thank you, Suchi. Our next speaker is a college dropout, but he has revolutionized modern-day city transportation. His startup is the highest valued startup in the world. A serial entrepreneur, Travis Kalanick, co-founder and CEO, Uber Technology. He credits his success to receiving 100 no's every day for 4 years straight before he achieved success. Travis Kalanick. In the adventure that I think is also known as Uber, we have rolled out our service in over 68 countries in almost 400 cities. That experience isn't as you might expect. It wasn't centralized. It wasn't from the center out, but it was something more organic than that. At Uber, we have, because we're in almost 400 cities, we have 400 startups. Those startups are rolling out a transportation system in every city that it's in. Those startups are the sons and daughters of that city in which they roll that transportation system out in. And we have empowered those local teams to create and live their dreams for their cities and their country. And the optimism that we see worldwide is inspiring. But the optimism that I've seen personally in our Uber India team and the city teams specifically has been, it makes me speechless. And it sort of came together for me when I was in San Jose and saw the Honorable Prime Minister speak alongside some of the world's great CEOs, Google, Adobe, many others, led by the sons and daughters of India. And it came together for me because the energy in that room was palpable, and the energy in that room spoke to a moment in time that I think everybody in that room will remember, and I think everybody in this moment in time in India's technology history and economic history will remember. And I'm incredibly appreciative to be a very small part of it. Thank you. Thank you, Travis. With the dream of unlocking the true potential of the mobile ecosystem, Naveen Tiwari created InMobi, the largest discovery platform in the world.
InMobi has been recognized by MIT Technology Review as one of the 50 most disruptive companies in the world. Naveen Tiwari. 10 years ago, while I was still a student in US, I used to dream and imagine that there may come a world when, just like the US, there will be companies created by Aam Aadmi which would go on and become large. Today, just look at this room. Where has our country come to within 10 years itself? The room itself calls for it. Today, I think that dream is coming true, and I'm just absolutely lucky to be a very, very small part of that big dream that this country is fulfilling. We created InMobi about 8 years ago. We didn't realize at that point of time that InMobi would become a global company. We created InMobi and we started to go outside of India and build a company across the globe, across Asia, Europe, US, China, and Japan. Today, we are one of the 3 largest advertising platforms in the world, just behind Google and Facebook. And we take massive pride in the fact that every IP that goes inside our platform is created by engineers sitting in India. Each one of these engineers have a very different level of passion to try and take their technology, take their IP all the way out into the world and impact the lives of billions and billions of people. Today, our technology touches 1.5 billion people every day, and we feel that's what India is trying to touch on a daily basis. We think over the next few years, and we dream over the next few years to be able to convert InMobi into a world-class company where every one of us as Indians can be proud of the fact that it is named alongside the biggest companies out there. And that's our dream. And that dream we see getting fulfilled not just by the passion that we carry, sir, but also by the fact of the changes that you're trying to bring about. This is just the beginning of that change that we see out happening. I can say one thing very confidently. As an entrepreneur, as a middle-class person who turned into an entrepreneur, this country's problems will be solved by the entrepreneurs from this country, not by people from outside. We have some major challenges in this country, and those challenges are not going to be sorted by either existing large companies of India or global companies. They'll be solved by entrepreneurs because they understand those problems really well. And we feel that under your guidance, a lot of the entrepreneurs are behind you to basically take India to the next level. Jai Hind. Our next speaker's startup combines genetic health profile and health history with genetic counseling and provides actionable steps toward a healthier life. Anuradha Acharya created Map My Genome with the vision Better Health for India using technology and has awards like Young Global Leader and Emerging Company of the Year 2015 to her credit. Anuradha Acharya. Good evening. So Ayurveda is the first personalized medicine of its kind by looking at 3 different kinds of classifications. However, as we grow along, I think India somewhere lost the whole race, at least lagged behind the race for personalized medicine. And so when the human genome was completed, we had a very need to be able to say, why can't we be able to do something to sequence massive amounts of data for the Indian population? Because countries like Iceland have done it, US and UK are looking at it. So we should be able to do it. And the question is, why do we need to do that? And the reason is that when you look at cardiac conditions and you look at how it's different between
the Indians and the US, you find sometimes we are 3 times higher predisposed than the average Caucasian. When you look at certain things like the Arya, the certain Vaishya community, you find that for a specific type of conditions, we are 4,000 times more predisposed than the others. So that's why we took on the quest for Map My Genome to be able to say, can we be able to impact 100 million lives by looking at the genetic predisposition just by using a simple swab method. And that's what we've done with our Genome Patri product. Now, when you think about it, this is the ultimate Make in India project because it deals with people that are made in India, we, all of us. It not only enables us to find out what makes us unique, it also allows us to be able to then say, how do we impact health, how do we impact agriculture, and also how do we unravel the mysteries of our own history. And before I end, I think I'd like to say a highly mutated version of Bob Marley's Get Up, Stand Up. It goes as start up, stand up for your right. Start up, stand up, don't give up the fight. Now, doubting man, don't tell me what I need to do. Perhaps you don't know what my disruptions really can do. And while India's history has been laced with gold, we will tell a story that has never been told before. So now you see the light, hey, stand up for your right. Thank you very much. Our next speaker's mission was to create a world where people work to make a life, not just a living. Adam Newman's WeWorks friendly communal workspaces have attracted more than 30,000 members across the globe, including startups and Fortune 500 companies. WeWork has raised billions of dollars in funding and is one of the most valuable startups in the world. Adam Newman. Honorable Prime Minister, I just came here 5 days ago for the first time, so I'm still an early student of India, but here is what I've observed. India's democracy embodies the we generation. The we generation in India know that the sharing economy is the future. Being part of something greater than yourself is the future. If I treat you the way I want to be treated, then we can actually make a difference and be successful. And if we define success as not just making money, but as being well and happy and having an ability to give and receive, then we've redefined the world. For a very spiritual country, and I can definitely tell you this is the most spiritual country in the world, I'm surprised a little bit from the amount of talk I heard about valuation and raising money and bubbles and building big companies. That is not the goal. The goal is finding something that you truly love. Make sure it has intention behind it. Make sure it's going to make the world a better place. Put those two things together, and I swear to you, success will follow, the money will follow, and you will change the world. And I'll finish with this. The last thing I learned in the past 5 days is you do not need to be from India to love India. Thank you. Thank you, Adam. Our next speaker became the youngest CEO in India at the age of 17. He dropped out of college to start his own company without his family knowing of his move. He's a dropout, which made him eligible for the coveted and very fascinating Peter Thiel's fellowship for $100,000. Today, Ritesh owns more hotel rooms than the Taj Group of hotels. Ritesh Agarwal. This is very humbling to be here and part of a dais which has such esteemed people. 26th January, when for the first time Prime Minister Shri Modi ji announced the Jan Dhan Yojana, it was a time for the unbanked in India. Then it was the Swachh Bharat, which was for every resident in this country. My co-entrepreneurs, today is our day, and I couldn't be more excited. I've said multiple times, but I have to say this.
I grew up in a very small town in the southern half of Orissa. To be able to imagine that someone from that place, without having gone to college at the age of 22, can possibly create the largest hotel brand in this country, create 40,000 plus indirect employment across hotels, was unimaginable in any other country of the world, at least for me. So thank you so much for making this happen. I think one very important thing that I very personally, passionately feel about is while there is a massive work going on in Make in India, I think as Apple says, designed in California and made in China, I would like to make designed in India, made for the world. And we believe in it more than ever before. We believe in building products in this part of the world which is creative for across every city and every part of the world. Going forward, I think the only thing that I dream of, and I'm willing to put my foot forward along with almost every one of you in here, is to dream about a country 15, 20 years from now where we'll have more self-employed people than the number of people employed for other companies. And hence, today's day is a remarkable day in that direction. Thank you. Thank you, Ritesh. Our next speaker's mission was to help mankind live healthier and longer. Shashank ND has created Practo, Asia's leading healthcare platform. Practo has a workforce of over 2,000 employees in 15 countries, has made 4 acquisitions, and is now expanding its footprint globally. Practo has grown to be the world's largest healthcare appointment platform. Shashank. Honorable Prime Minister and delegates here, thank you for giving me this opportunity of talking today. Practo manages more than 40 million appointments annually across 15 countries. We are one of the fastest growing health platforms in the world. But 8 years back, when I was in college in 2008, things were very different. When I started Practo in my final year in college, I was discouraged. I was told not to start off because I'm in college, and it's 2008. I was told not to start up because it was something that I was trying to do, had never been done before in the world. They asked me, has this been done in the US? I said no. They asked me, has this been done in China? I said no. They said, how can this happen anywhere else other than those 2 places? And today I'm very happy to let you know that we have changed many things that has never happened before in the world and innovated ourselves to where we are today. And this has happened because we never gave up on what we believed in. Through all those hard days where we had to work through the nights, we never gave up. We believed in something that the world hadn't seen before and which we believed we can deliver and bring to this world. And so when people asked us that when the same concept was not possible by an Apple or by Microsoft or by Google, we were able to prove them wrong by doing this, what we've done today. I believe that if I, as a student entrepreneur, could make this happen from 8 years back, a lot more can be possible in India today. The young India that I see and in Tier 2 and Tier 3 city are hungry, they are curious, and they are passionate to deliver and help India. This initiative that has taken place today is going to go in a very long way to give them confidence that we are a big part of the economy going ahead. And we have a responsibility to deliver to this country. And thank you, Prime Minister, for taking this initiative. We are with you, and thank you for having this startup event. Our last speaker is an entrepreneur who's made a success of traditional Indian drinks in a market full of foreign carbonated beverages. With the theme, Life is Still Beautiful, Paperboat has had a dream run over the past 2 years and wants to grow to be the world's largest functional beverage company. Neeraj Kakkar, Paperboat. When I was 14 years old, my parents let go of all the comforts to put me in a private school for doing my class 11th and 12th. It's a common occurrence in middle class, small town India. It was really expensive school which we couldn't afford. On the first day of that school,
My mom put the pressed uniform on the bed, and there was a tie along with it. My sister, who was wearing a blue suit, she came and touched the tie with so much longing. My parents, in spite of all their hardships and sacrifices, could not afford to send more than one school to a private, more than one of their children to private school. That day, when I was sitting on the bus, there was a knot of feeling on my head, in my heart. The feelings were about, I was proud that I was wearing that. I was optimistic about future. I was afraid to be sitting in a bus where people were speaking English, a language I did not know. But most importantly, there was gratitude. There was gratitude for every single one of my family members who were making sacrifices to enable me to be the catalyst who can take the family places. I was the chosen one. Today, after so many years, I have the same knot of feelings on my chest again. Once again, I am the chosen one. Once again, I am the catalyst. In a country where there are so many challenges still to overcome, I am grateful that I can dream. The onus is on me to create products which are not only India's best, but which can beat any other product in the world. The onus is on me to create opportunities for 1.2 billion siblings of mine. The onus is on me to make this the best country in the world. Dear Prime Minister, I promise I would sincerely believe in the vision of Startup India, Stand Up India. Thank you. Thank you, all the distinguished speakers. It was extremely inspiring to hear all of you. The next part of our program takes you to an academic institution which has combined innovation, design in partnership with science and technology, with Ministry of Human Resource Development, and with the private sector. The IIT Madras has a unique research park which has worked with private companies to encourage startups. It has almost 70 companies and over 100 startups working together in its research park. It is a great inspirational story, the IIT Madras Research Park. Innovation flourishes when three sets of people get together. The faculty, who has interdisciplinary knowledge, and then young students who can work 24/7. Another good part about them is they are willing to do whatever is required. But the third component is of industrial R&D personnel. And the IIT Madras Research Park was set up to bring the industry to the attached campus. IIT Madras Research Park is the foremost park in the country, and it has set a new benchmark of industry-academia R&D partnership. It has 5 towers with 1.2 million square feet of built-up area, plus about 265,000 square feet of parking lot. Over 50 Indian and multinational companies have set up their R&D in this park. IIT Madras has already incubated 100 companies in the last 3 to 4 years, and most of them are located in the research park. It is incubating 30 to 40 companies every year, probably more. Not just companies driving commerce, but companies which drives technology in the country, which can find solutions to the social problems of India. The research park has been built as a completely self-sustaining organization. Research park becomes a very important extension of IIT Madras to drive innovation, translate the technology from labs all the way to the market. Honorable Prime Minister, we'll take you live to IIT Madras, where the IIT Madras Director, Dr. Bhaskar Ramamurthy and Professor Ashok Jhunjhunwala will give you an overview. Thank you, sir. Good evening. That was a very brief but exciting overview, walkthrough our research park, India's first university-based research park. We have with us today some of the companies who are in the research park, as well as the incubated companies and the faculty who work with them. I'll now ask my colleague, Professor Jhunjhunwala, to introduce a few of them to you so that they can share their experiences. Thank you very much, sir. We start with
B. Santanam, our lead industry partner from Saint-Gobain in India. Thank you, Ashok. Saint-Gobain's mission is to innovate for sustainable habitats in hot and humid climates for Asia, Pacific, and Africa. We are the anchor research partner for IIT Madras Research Park. It's an excellent ecosystem that has the necessary intellectual and physical resources for innovation. We have already filed 10 patents this year from India. Saint-Gobain believes Make in India necessarily includes Innovate in India for the world. For this, IIT Madras is really the ideal partner for us. Thank you. I next introduce PJ Narayanan of Vortex Engineering, one of our industry partner who has been doing immense amount of work at Research Park. Sir, ATM availability in rural India is a challenge. To address some of these challenges, Vortex and IIT Madras has developed an ATM product which consumes less power and works without AC and can be solar powered and of course cost less. Vortex ATMs can contribute and immensely be of a contributor for financial inclusion programs like Jan Dhan Yojana and make it a great success. Thank you. So one of our incubated companies, Skillberry, has done some immense work on making a product which will make skill in India very, very useful. Sabrina. Thank you, sir. India needs large-scale skill development in ITI trades like welding. Skillberry has built a welding simulator that does this without spending a lot of money on materials and power. So this was conceived and built together with IIT Madras, and the success would not have been possible without the support of the ambience of the research park here. Thank you. I next want to introduce Mr. Saravanan, the CEO and founder of H6, another company which is working on skilling India. We at Skill Angels are working towards imparting higher order thinking skills or the cognitive skills to the children. We believe that skilling India is just not about empowering them with core domain skills, but also giving every student an opportunity to stay better focused, higher order thinking, and stronger problem solving skills. We at RSAIS, we believe this is our part to make in India, in making India truly the skill capital of the world, sir. Finally, I request Prabhu Rajgopal of Planis Technology, another industrial partner. Good evening, sir. Planis Technologies makes underwater robots for inspection of immersed structures in shipping and oil and gas industry. Within a short span of time, we have gone from conception to products being available already in the market and are among the few companies in the world that offer this service. Our journey would not have been possible without the support available from IIT Madras and the resources at our pioneering research park. Sir, I would like to add that the research park that we have built has given huge academic and industry interaction together and resulted into a large number of startups, technology startups. We are now starting to see other research parks being built at IIT Bombay, at IIT Kharagpur, and at other IITs. I think we are all moving towards Make in India and making Startup India a success. Thank you. I wanted to point out that almost 75% of the funds for this research park actually came from the private sector, with only seeding coming from the government of India. And with that, sir, I will basically open it up. If you have any questions to ask us, we have various people who are working in the research park, leading companies, and also our incubators out here. We are here live, sir. With you. So, thank you very much for this interaction. We greatly appreciate it. We'll move forward with our program. Ladies and gentlemen, we have had a very detailed deliberation since morning today. We will now request our Honorable Prime Minister to release the Startup Action Plan.
Thank you very much, sir, for releasing the Startup Action Plan. May I now request the Honorable Prime Minister to kindly address this gathering. मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अरुण जेटली जी, श्रीमती निर्मला जी, मंच पर विराजमान एक से बढ़कर एक सभी सफल गाथाओं के रचयिता और मेरे सामने उपस्थित एनर्जेटिक इंडिया के सभी नौजवान साथियों, शायद जिनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है उनके लिए व्यवस्था होगी। हाँ। आज सैटरडे है, सरकार का स्वभाव छुट्टी का होता है। और 6 बजने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई आपको पूछे फर्क क्या है तो फर्क यही है। मैं भी कभी सोचता हूं कि मुझे भी ईश्वर ने आप जैसी कोई ताकत दी होती। जब रितेश को सुन रहा था तो मुझे विचार आ रहा था कि एक चाय बेचने वाले ने होटल चेन का विचार क्यों नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि मेरे नसीब में नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन देश के करोड़ों नौजवान कुछ कर पाए, ये उम्मीद तो मेरे दिल में भरी पड़ी है। जब मैंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो ऐसे ही हवा के झोंके की तरह बात आई और चली गई, कहीं रजिस्टर ही नहीं हुई। लेकिन आज शायद 100-125 दिन के बाद अब ये रजिस्टर होगी कि स्टार्टअप इंडिया है क्या। सीइंग इज बिलीविंग। आज देश भर के आईआईटीज में भी नौजवान आपको देख रहे हैं। देश के कई स्थानों पर युवा इस कार्यक्रम को सुबह से बैठ करके वे भी आपके साथ हिस्सेदार हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सरकार ये करेगी तो ये होगा, सरकार ये करेगी तो ये होगा। मेरी सोच थोड़ी अलग है। मेरी सोच ये है सरकार ये न करेगी तो इतना सारा होगा। और इसलिए आज आप सबको
इसलिए इकट्ठा किया है कि आप हमें बताइए हमें क्या क्या नहीं करना है। 70 साल तक बहुत कुछ किया हमने, और हम कहां पहुंचे। और मैं कहता हूं कि एक बार हम न करने का निर्णय करें तो ये लोग 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है, उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मृत्यु हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि ये कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, कुछ यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है नहीं साहब, इसमें तो पहले से ही ऐसा था। आप में से सबके जीवन में एक अनुभव आया होगा, जो सर्वनाश आपने सुना किसी की मां ने कहा हो या न कहा हो, लेकिन कम अधिक मात्रा में आपको सबको अनुभव आया ही होगा, क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ऑल स्टार्टअप्स। और जब कुछ सोचा होगा नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दूर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ नौकरी कर लो, देखो उसका पहचान है, वो नेताजी को जानते हैं, जाओ उसको मिल लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दी, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है। एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती हैं। और दुनिया में हर किसी ने यही किया होगा। कभी आज हम सोचें कि 1423 आई थिंक 1423 कोलंबस जब निकला होगा, क्या मिलने वाला था? लेकिन उसको लगा होगा कि कोई एक नया रूट मुझे खोजना है, विश्व को मुझे जोड़ना है, और वो चल पड़ा। और चलने के पहले उसने ढेर सारी चीजों का अध्ययन किया होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी, और नया एक उसने स्पाइस रूट को दुनिया को दिया होगा। आज जो स्पेस में काम कर रहे हैं, शुरू जब हुआ होगा तब लोग मजाक उड़ाते होंगे, यार ये क्या कर रहे हैं। हर चीज की कहीं शुरुआत होती है, तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है, औरों को वही दिखता है कि ये पागल है। और इसलिए जिन्होंने ये सफलता पाई है, वे सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है,
एक प्रकार से एडवेंचर उनकी प्रकृति का हिस्सा है, तब जाकर के होता है। स्टार्टर की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है। और तब जाकर के हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं। स्टार्टअप, मैं कल एडम से बात कर रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मिलने जैसा है। उसको हिंदुस्तान की स्पिरिचुअल दुनिया में बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन उसने मुझे एक बात अच्छी बताई। वो कह रहा है जो पैसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता है। जो कुछ करने के इरादे से आता है, पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा ये कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन किसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता हूं यह सोचा होगा, तब हुआ होगा। उबेर कुबेर बन गया। हमारे यहां कुबेर भंडारी होते थे ना पहले। मैं नहीं मानता हूं उसने पहले सोचा होगा, उसने पहले यही सोचा होगा कि भाई लोगों की समस्या का मैं समाधान कैसे करूं, सस्ते में कैसे करूं, और उसमें से एक व्यवस्था विकसित हो गई। जब स्टार्टअप की चर्चा होती है तो ज्यादातर आईटी के आसपास ही सोचा जाता है, और अब हर कुछ कितने कदम दूर है, बस ऐप के पास पहुंच के हो गया। हर समस्या का समाधान ऐप। खैर मैं उससे बहुत बेनिफिशियल हूं, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी ऐप शुरू किया है। मुझे इतने नए युवा विचार मिलते हैं, इतने लोगों से जानने को मिलता है, और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, देश भर के इस प्रकार के स्टार्टअप और दुनिया भर के लोगों से मैं कहता हूं, आप मेरे ऐप के साथ जुड़ करके आपकी सक्सेस स्टोरी बताइए, मैं दुनिया को बताऊंगा। क्योंकि यही वायरल होने वाला है, सक्सेस स्टोरी ही वायरल होने वाली है, और लोगों का मन मंदिर जो है वो सफलता को जकड़ने वाला है। निराशा का माहौल चला गया, वो दिन पूरे हो गए। आशा, विश्वास, कर गुजरने का इरादा, ये समय की नजर आ रहा है, और वही स्थितियों को बदलता है, वही परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए ताकत रखता है। और वो मैं अनुभव कर रहा हूं। और आज मैं जैसे ही यहां एंटर हुआ, सबने मुझे एक ही रिपोर्ट किया, साहब क्या एनर्जी है सब इस कार्यक्रम में। ये विज्ञान भवन को पहली बार भरा नहीं है, लेकिन एनर्जी पहली बार भरी है। और ये सभागृह में भले एनर्जी होगी, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के मन मंदिर का प्रतिबिंब है। यहां पर उनकी आशा आकांक्षाओं का प्रतिध्वनि है यहां पर। और उस अर्थ में इसका अपना एक महत्व है। जो ऐप बनाता है या जो स्टार्टअप की दुनिया में एंटर होता है या कोई नई चीजों को इनोवेट करता है, उसके मूल में कुछ नया करने का इरादा होता है, एडवेंचरस नेचर होता है, हर चीज की गहराई में जाने का स्वभाव होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उसके अंदर एक संवेदना होती है। बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे। उसके अंदर एक संवेदना होती है, और जब वो कोई बुरे हाल देखता है, कोई समस्या देखता है, वो उसे सोने नहीं देती। समस्या उसकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन वो उसे सोने नहीं देती है। उसका मन करता है मैं कोई रास्ता खोजूं, मैं कुछ करूं इसके लिए। मैं अभी बाहर आपका वर्चुअल एग्जीबिशन देख रहा था, वहां मुझे एक सिंपल चीज किसी ने बताई।
एक ऐसा ही पैड था हार्डबोर्ड का और बेल्ट था। अब इतने बड़े स्टार्टअप की दुनिया में उसको कहाँ रखा होगा वहाँ? मैंने पूछा, बोले साहब हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद जो इंजर्ड व्यक्ति है उसकी हड्डी तो टूटती है, उसको ले जाना है तो मेडिकल सर्विसेज के लोग आए हैं, तब तक क्या करें? तो उन्होंने एक हार्डबोर्ड पे एक सामान्य चीज बनाई है, उसके पैर के नीचे लगा दो पट्टी, कैसे बांध दो सब उस पर लिखा हुआ है। बोले कोई खर्चा नहीं है। अब इसका मतलब कि उसके दिल में आग लगी होगी एक, कि एक्सीडेंट होता है बेचारा कितना परेशान होता है, ले जाते ही दो हड्डियां और टूटती है। उसमें से उसने सोचा और वो एक इनोवेशन बन गया। किसी के लिए जो दर्द होता है, जो हमें दुआ देने की ताकत दे या न दे, हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था पैदा करती है जो इन लाखों करोड़ों के दर्द को दूर करने का कारण बन जाती है, और तब स्टार्टअप होता है। और इसलिए आपका ये स्टार्टअप का अभियान, ये बैंक बैलेंस और रुपये पैसे कीर्ति उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जन सामान्य को समस्याओं से मुक्ति दिलाना, सुविधाओं को सरल करना, इस एक महत्वपूर्ण काम को करने की ताकत रखता है। और इसलिए अगर हम हमारे आसपास बारीकी से देखें तो हमें तो लगेगा यार भगवान ने जो बुद्धि दी, मैं पढ़ा हूं, मैं टेक्नोलॉजी जानता हूं, मैं सोचूं इसका समाधान, मैं खोजूं कुछ, और फिर वो शुरू कर देता है। हर कोई सामान्य मानवी क्या करेगा? बेचारा उसे जूझेगा, या तो व्यवस्था को कोसेगा, कहेगा ये नहीं किया, वो नहीं किया, डिकना नहीं किया, खुशी हो गई, मीडिया वाला होगा तो रिपोर्ट कर देगा, समस्या के वैसे वैसे रह जाएगी, समस्या वैसी की वैसी रह जाएगी। लेकिन जिसके मन में ये जो चेतना पड़ी हुई है, वो उसका उपाय खोजेगा और वो स्टार्टअप को कारण बनता है। अब यहां इतने नौजवान हैं, मेरे मन में आता है कि आप लोग सोचिए, हमारे देश का किसान इतनी मेहनत करता है, और जो अनाज की पैदावार होती है बहुत मात्रा में वो वेस्ट जाता है, बर्बाद होता है। अब पुराने जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पैसे, ये व्यवस्थाएं, क्या मेरा कोई नौजवान उस पर दिमाग लगा करके ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकता है कि जो एफोर्डेबल हो और इतना बड़ा हमारा जो वेस्टेज है वो बच जाए? हो सकता है शायद दुनिया के अनेक गरीब देशों का पेट भर सकते हैं, इतना वेस्टेज जा रहा है। हमारे फल फूल सब्जी, फल पैदा करने वाला किसान पहाड़ियों में रहता है, शहर में आने तक बेचारे का माल खराब हो जाता है। हम वो क्या टेक्नोलॉजी दे, क्या व्यवस्था दे आधुनिक? मैं अभी एक दिन कुछ ये एरेटेड वाटर बना रही कंपनियों वालों को मिला था। मैंने कहा आप इतना बढ़िया बढ़िया बनाते हो, पेप्सी और कोला और न जाने क्या क्या है, मुझे नाम भी मुझे मालूम नहीं, क्यों ना आप 2%, 5% नेचुरल फ्रूट जूस कंपलसरी उसका हिस्सा बना दें। हिंदुस्तान के हर किसान जो पैदावार करता है अपने आप बिक जाएगी। अगर इस पर कोई सोचे, आप देखिए आज हमारे ही देश के वैज्ञानिकों ने फार्मास्यूटिकल के द्वारा हमारे लोगों ने वैक्सीन में काम किया। आज दुनिया के अधिकतम देशों में अधिकतम गरीब लोगों को सस्ते में सस्ता बालकों को अगर वैक्सीन कहीं से पहुंचता है तो भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा किया हुआ पहुंचता है। और इन दिनों जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं साहब हमारी मांग बहुत है, उसके प्रोडक्शन के लिए और क्या रास्ता निकाले। लोग अपना डोनेशन देने के लिए तैयार होते हैं कि हमने जो भारत के लोगों ने जो वैक्सीन की दिशा में कितने करोड़ों करोड़ों बालकों की जिंदगी बच रही है। जिसने लैब में बैठ करके काम किया होगा, जिसने कंसेप्ट सोचा होगा, उसकी तो उस समय पहचान नहीं हुई होगी, लेकिन आज लगता है कि उसने कितनी बड़ी मानवता की सेवा की।
हम ऐसी कौन सी चीजें करें जिसके कारण हमारे यहां, अब जैसे हमारे एटॉमिक एनर्जी वालों ने ओनियन को लंबे समय तक बचाने के लिए काफी व्यवस्थाएं विकसित की है, क्योंकि प्याज के दाम कभी ऊपर कभी नीचे चले जाते हैं तो सरकारों का सांस भी ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन क्यों तो उसको लंबे समय रहता नहीं, खराब हो जाता है। उत्पादन ज्यादा हुआ तो भी किसान मरता है, उत्पादन कम हुआ लेकिन उसको प्रिजर्व करने की व्यवस्थाएं अगर विकसित होती है, एटॉमिक एनर्जी वाले इसमें काफी काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतना कॉस्टली होता है। क्या हमारे स्टार्टअप की दुनिया के नौजवान ऐसी चीजों में जाएं? आईटी के दायरे से बाहर निकल करके हम और ऐसे छोटे छोटे पुर्जे, अब भारत में जुगाड़, मैं समझता हूं शायद ऐसा इनोवेटिव इंडिया दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा जी। आप हर व्यक्ति के पास कोई न कोई इनोवेशन है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि बिजली नहीं है तो अपनी मोटरसाइकिल से पंप चलाते हैं और पानी निकालते हैं और खेत में पानी पहुंचा देते हैं। उसने अपने तरीके से ढूंढा होता है। ऐसे जुगाड़ करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ करता है, अपनी व्यवस्था को संभाल लेता है। लेकिन अगर हमारे पास उस प्रकार की दृष्टि हो, दर्शन हो, देखे तो हमें स्पार्क होता है, यार इसको मैं स्केलेबल करूं, ऐसी एक व्यवस्था में बना दूंगा। हम जब मेक इन इंडिया कहते हैं तो मेक फॉर इंडिया भी है, क्योंकि 125 करोड़ का देश है, इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो फुल प्रूफ कैसे बने, आसान कैसे हो और सामान्य मानवी के लिए वो इजीली एक्सेसिबल कैसे हो। ये अगर व्यवस्थाएं देने में हम सफल होते हैं, और मैं मानता हूं कि हमारे देश का नौजवान हमारी अपनी समस्याओं को, यहां किसी ने कहा कि मैं अगर उस देश को, उसकी समस्याओं को समझूंगा, शायद तिवारी ने कहा, मैं अपनी समस्याओं को समझूंगा तब जाकर के मुझे रास्ते खोजने का सूझेगा। और ये जितना हमारा बढ़ेगा, देश के विकास के लिए बहुत संभावना है। उन संभावनाओं को लेकर के, छोटी छोटी आवश्यकताओं से लेकर के बड़ी बड़ी, और स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को बद संभालना है, वो कर लेगा। हमारे देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जाता है, टीचर के अपॉइंटमेंट पर बल दिया जाता है, वो काम हो भी रहा है, लेकिन समय की मांग है क्वालिटी एजुकेशन की। गरीब से गरीब, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाला व्यक्ति हो, पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति हो, मैं ऐसे कैसे चीजों को खोज के निकालूं कि उसी क्वालिटी का एजुकेशन जो अमीर घराने के बच्चों को मिलता है, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा गरीब से गरीब तक मैं कैसे पहुंचाऊं। और देश तब बदलेगा कि हम समाज के आखिरी इंसान को इस सुविधाओं से लाभान्वित करके उसकी जिंदगी बदलने का अवसर दे। हमें उसको फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है तो वहां भी ऐसे स्पार्क वाले बच्चे होंगे जो उठ करके खड़े हो जाएंगे और दुनिया बदल देंगे। हेल्थ सेक्टर, आज हेल्थ सेक्टर ज्यादातर डॉक्टरों पर डिपेंडेंट कम है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। डॉक्टर भी खुद टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। मशीन तय करता है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, फिर डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं किताब देख कर ले लो। इसका मतलब हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है, लेकिन भारत जैसे देश में ये अफोर्डेबल कैसे हो, ये हमारे सामने चुनौती है। सस्ते में सस्ता व्यवस्था का कैसे बने,
इस पर हम सोचें, नएपन से सोचें। और इसलिए स्टार्टअप कहने के बाद कुछ लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाई फाई होगा, लैपटॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी, मोबाइल से जुड़े होंगे। ऐसा नहीं है। ये लोग हैं जिन्होंने कोई न कोई कमाल किए। यहाँ हर प्रकार के लोग हैं। आप देखिए हैंडीक्राफ्ट, भारत का हैंडीक्राफ्ट दुनिया में अपना डंका बजाए। ऐसी आप ऐप बना करके दुनिया में प्लेटफॉर्म क्यों न खड़ा करें। सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, हम उससे 2 कदम आगे कैसे जाएं और उसमें जैसी ग्लोबल रिक्वायरमेंट हो वैसे डिजाइनिंग भी प्रोवाइड करें, ताकि हमारा जो गरीब आदमी गांव में बैठ करके छोटी चीजें बनाता है उसको भी आइडिया मिला कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, यहां स्टिच मत करो, यहां करो, लकड़ी ऐसे मत रखो, लकड़ी ऐसे रखो। वो अपने आप बदलता रहेगा और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। इसके लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए, ये बड़ी रिक्वायरमेंट है। और ये काम आप नौजवानों के दिमाग से हो सकता है। और इसलिए मैं जब कहता हूं स्टार्टअप इंडिया, तो मैं मान के चलता हूं स्टैंड अप इंडिया। इसके लिए मुझे अलग सोच करने की जरूरत नहीं है। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो, जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, हाथ में हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता है। आज मैं आईटी प्रोफेशनल से कहना चाहूंगा, विश्व के किसी भी दुनिया के देश के नेताओं से मैं मिलता हूं, दुनिया का कोई भी डेलीगेशन आता है, उनकी जो बातों होती है उसमें एक चिंता हर एक को सता रही है और वो है साइबर सिक्योरिटी। हर कोई परेशान है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। क्या भारत साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अथॉरिटी बन सकता है? एक बार हिंदुस्तान का ब्रांड का साइबर सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर मिल गया, अब दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। ये कर सकते हैं क्या? मानव जात के लिए चुनौतियां आवश्यक हैं, क्योंकि सरफरे लोग तो हैं जो तबाही करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम मानवता को बचा भी तो सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं। और ये भी सही है, भारत के पास मिलियंस ऑफ मिलियन प्रॉब्लम है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इस बात का भरोसा भी है कि बिलियंस ऑफ बिलियन माइंड भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन माइंड भी तो हमारे देश में है। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए। और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा जी। जब किसी की जिंदगी में बदलाव लाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज यहां हमारे सामने एक एक्शन प्लान प्रस्तुत हुआ है। उस एक्शन प्लान की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, ताकि आप सुबह से सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये भी तो हो भाई क्या करके होने वाला है। सबसे पहला मेरा घोष वाक्य है कि सरकार बीच में ना आए, बस बहुत कुछ हो जाएगा। और उसी विचार के आसपास जो की चीजें बनाई है, एक तो हमने महत्वपूर्ण निर्णय किया है, वो है सेल्फ सर्टिफिकेशन आधारित कंप्लायंस की व्यवस्था। स्टार्टअप्स के लिए
9 श्रम और पर्यावरण कानून जो आपको प्रभावित करते हैं के संबंध में सेल्फ सर्टिफिकेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया है। और एक बात, 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। और आप समझ सकते हैं कि जब इंस्पेक्टर नहीं आएगा तो कितनी सुविधा रहती है। दूसरी बात है स्टार्टअप इंडिया हब, सिंगल पॉइंट कांटेक्ट। ये हम व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं और हैंड होल्डिंग की व्यवस्था। स्टार्टअप में जैसे इन नौजवानों में एक विशेषता मैंने देखी, इन लोगों से मैं कल से बातें कर रहा हूं, काफी कुछ मैं भी उनसे सीख रहा हूं। हर एक के दिमाग में एक चीज रही है कि वो अपना तो कर रहे हैं, लेकिन गार्डियन के नाते, मेंटरिंग के नाते बहुत अच्छा काम कर, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। ये उनका अपना सोशल कंट्रीब्यूशन के रूप में कर रहे हैं। मेंटरिंग के रूप में वो औरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसलिए हैंड होल्डिंग की व्यवस्था, उस पर हम बल देना चाहते हैं। एक मित्र के रूप में, एक सलाहकार के रूप में, एक साथी के रूप में सरकार कैसे आपके साथ काम करे। मोबाइल ऐप और पोर्टल इस वर्ष की 1 अप्रैल से स्टार्टअप्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल और एक मोबाइल आधारित ऐप से जरिए संचालित होने वाला एक छोटा सा फॉर्म शुरू किया जाएगा। वरना हमारे यहां तो एड्रेस भी लिखते हैं तो 10 लाइन का होता है। फलाना गांव, फलानी गली के सामने, फलाने मोहल्ले से गुजरते हुए पिछली खिड़की में। मूलतः हम लोगों का स्वभाव हर चीज को बड़ा करना, लंबा कर रहा है। तो इसको एक मोबाइल फोन पर सिंपल सा एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म बन जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसको रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी उसी प्रकार से होगी। एक और प्रॉब्लम रहता है स्टार्टअप के लोगों के लिए, पेटेंट का। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सबसे बड़ी बात रहती है, क्योंकि आखिरकार वही तो पूंजी है स्टार्टअप वालों की। अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला, लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ पेटेंट के लिए महीनों लग जाते हैं प्रोसेस में। ये चिंताजनक व्यवस्था को बदलना है और पेटेंट रजिस्ट्रेशन का शीघ्र पता लगाना एवं कानूनी सहायता। हम नए प्रयोगों को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता को समझते हैं। हम स्टार्टअप्स के आईपीआर संरक्षण की स्कीम ला रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप्स को पेटेंट आदि के आवेदन शीघ्र फाइल करने के में सहायता मिलेगी। और ये भी सही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दुनिया में विश्व में जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें काफी पीछे हम लोग। आईपी में नहीं है, लेकिन वाईपी में है। हमारे पास यूथ प्रॉपर्टी है, वाईपी, और वो मुझे वाईपी और आईपी को मिलाना है ताकि हमें कुछ ज्यादा परिणाम मिले। हम ये भी एक सोच रहे हैं कि भारत के प्रमुख शहरों में एक इस काम के लिए फैसिलिटेशन की व्यवस्था हो, स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या और लोग हों, उनके साथ मिलकर के इस विषय के वकीलों का एक समूह हो। इन सबको जोड़ करके उनको कैसे निःशुल्क व्यवस्था हो, ताकि इस फील्ड में काम करने वाले वकीलों की संख्या बहुत कम है और फी भी बहुत ज़्यादा है। और उसको लगता है कि भाई इस काम के लिए मैं इतने रुपये दूँ, देखो अभी करता रहूँ और उसमें उतनी प्रॉपर्टी चोरी हो जाती है, बेचारा कहीं का रहता नहीं है। तो इसलिए
बिना पैसे उसको ये व्यवस्था मिले। उसी प्रकार से फीस में भी आज जो फी है पेटेंट के लिए, उसमें हम 80% रिडक्शन करेंगे। क्योंकि देखिए, भारत का भविष्य भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी में है, और इनोवेशन और क्रिएटिविटी को जितना हम बल देंगे उतना ही हमें परिणाम मिलेगा। हम स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद की शर्तों में भी छूट देने का निर्णय कर रहे हैं। सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हम एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर के आधार पर स्टार्टअप को छूट देंगे। हमारा देश में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी काम है तो पूछते हैं कितना टर्नओवर है। वो कहता है मौका दोगे तभी तो टर्नओवर शुरू होगा। या कोई काम देते बोले कितना एक्सपीरियंस, वो कहता है भाई एक्सपीरियंस की शुरुआत तो करो कैसे। और इसलिए नए के लिए दरवाजे बंद करने की व्यवस्था है। हम उसमें छूट देने की दिशा में बहुत सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि क्वालिटी को, हाँ उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन नया है इसलिए उसको मौका न मिले, ये स्थिति तो बदलनी है, तभी नौजवानों को अवसर मिलेगा। लेकिन मेरा आग्रह है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, तो इस पर हम जरूर बल देंगे। एक और चिंता का विषय है, हमारे देश में एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक बार पाइप में आ गए, और इसलिए स्टार्टअप्स के लिए हम सबसे पहले एक एग्जिट की व्यवस्था कर रहे हैं। हम यह भली भांति समझते हैं कि एक विशाल और सफल कारोबार का निर्माण करने के लिए असफलताओं से बचा नहीं जा सकता। असफलताएं होगी, और मैं सबसे ज्यादा असफलताओं के लिए हिम्मत करने वालों को प्रमोट करना चाहता हूं। जो पानी से भागता है वो कभी तैरना नहीं सीख सकता है। एक बार तो डूबना ही पड़ता है, तब जाकर के तैरना शुरू होता है। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए 90 दिन के भीतर स्टार्टअप्स एग्जिट कर पाए, हम ऐसी व्यवस्था करने के लिए संसद में बैंकरप्सी बिल 2015 हम लाए हैं। अब बाकी मुसीबत तो आप जानते हैं। अब आप नौजवान अपने ट्विटर फेसबुक की दुनिया में मैसेज दीजिए, काम अटका पड़ा है पार्लियामेंट में। हो सकता है आप समझेंगे कुछ लोग। फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले 4 वर्षों में 2500 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष आवंटन के साथ 10,000 करोड़ रुपए का डेडिकेटेड फंड बनाया जाएगा। वैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों इस काम को शुरू किया है। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड आपके फंड संबंधी आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए हम अगले 4 वर्षों में प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपए की निधि के साथ आपके क्रेडिट गारंटी स्कीम लाएंगे, और इसके कारण मैं समझता हूं काफी सुविधाएं आपकी बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से
टैक्स इंसेंटिव्स, स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए हम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फंड्स के निवेश किए जाने वाले कैपिटल गेन टैक्स की छूट देना चाहते हैं। अब बाकी बात तो फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे, लेकिन मैंने उनकी हाजिरी में बोल दिया है तो गाड़ी आगे चलेगी। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचने से आए हुए धन को अपने ही स्टार्टअप में लगाए तो कैपिटल गेन से उसे मुक्ति दी जाएगी। स्टार्टअप से प्रॉफिट को 3 साल के लिए इनकम टैक्स से मुक्ति दे दी जाएगी। विमेन एंटरप्रेन्योर की संख्या बढ़ रही है, विमेन स्टार्टअप्स की। मैं सरकार से कहूंगा कोई विशेष योजना उनके लिए बना सकते हैं तो। हम फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स से संबंधित आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इंक्यूबेशन एंड इंडस्ट्री एकेडेमिया, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि इसके बिना इस विषय को डेवलप नहीं किया जा सकता। और इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन एम विश्व स्तरीय इनोवेशन हब को बढ़ावा देने, टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप्स को कॉम्पिटिटिव बनाना और उसके लिए एक अटल इनोवेशन मिशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रतिभा उपयोग के उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा इंक्यूबेटर्स के नेटवर्क को सुदृढ़ करना। इसके तहत सेक्टर स्पेसिफिक इंक्यूबेटर्स को निर्माण करना है। 500 टिंकरिंग लैब्स तैयार होंगे। प्री इंक्यूबेशन की अलग व्यवस्था की जाएगी। मौजूदा जो इंक्यूबेशन सेंटर हैं उसको और बलवान बनाया जाएगा और स्टार्टअप्स को सीड कैपिटल भी दिया जाएगा। इनोवेशन को एक राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड देने की दिशा में भी सोचा जाएगा, जिसके कारण इस बात को प्रोत्साहन मिले, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में ऑलरेडी 35 नए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापना करने का तो काम चल ही रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी मॉडल इसमें लिया है और करीब 35 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से नए इंक्यूबेशन सेंटर बन रहे हैं। राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उसमें 31 सेंटर्स ऑफ इनोवेशन, 13 स्टार्टअप सेंटर्स और 18 टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स की स्थापना का भी काम चल रहा है। अभी आपने आईआईटी मद्रास का देखा, उन्होंने रिसर्च पार्क में जिस प्रकार से काम खड़ा किए हैं, 100 से ज्यादा कंपनियां उस पर काम कर रही है। इसी प्रकार से हम 7 और सेंटर खड़े करना चाहते हैं देश में और उसके लिए करीब 100 करोड़ रुपीस भारत सरकार देगी ताकि ये काम आगे बढ़े। बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हम जितना बल दें उतना कम है और बायोटेक्नोलॉजी में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए 5 नए बायो क्लस्टर्स, 50 नए बायो इंक्यूबेटर्स,
150 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेस और 20 बायो कनेक्ट ऑफिसेस बनाने का निर्णय किया है। विद्यार्थियों में भी एक टैलेंट रहती है इस विषय में, इवन स्कूल के बच्चों में भी कुछ न कुछ इनोवेशन का स्वभाव रहता है। इसको बढ़ावा देना है, क्योंकि भारत ने इनोवेशन में कुछ न कुछ कर दिखाना होगा। तो छात्रों के लिए इनोवेशन आधारित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, क्योंकि उनके अंदर ये जो स्पार्क पड़ा हुआ है उसको अगर चैनलाइज करे तो देश को बहुत कुछ मिल सकता है। स्कूली छात्रों के लिए इनोवेशन के कोर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और 5 लाख स्कूलों में 10 लाख बच्चों पर फोकस करके इस काम को बढ़ावा दिया जाएगा। इंक्यूबेटर ग्रांड चैलेंजेस, सरकार 10 ऐसे इंक्यूबेटर की पहचान करेगी जो वर्ल्ड क्लास बनने की क्षमता रखते हैं। इनमें से प्रत्येक को 10 करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए कोई न कोई इवेंट करने रहेंगे, ताकि क्या हो रहा है इसका भी परिचय होना जरूरी है। और इसलिए स्टार्टअप फेस्ट, इसकी एक परंपरा हमारे देश में बननी चाहिए। मैं जब गत सितंबर में यूएस गया, हमारे शुक्ल जी यहाँ बैठे हैं, तो और काफी मित्र उस समय थे वहाँ। यूएस में स्टार्टअप की दिशा में भारतीय लोगों ने बहुत कुछ काम किया है। तो मैं हिंदुस्तान से 40 ऐसे स्टार्टअप के लोगों को लेके गया था और वहां पर एक जॉइंट इवेंट किया था। इतना इंस्पायरिंग था, मैं काफी देर हर चीज को देखा था। भारत में भी हम स्टार्टअप फेस्ट को परंपरागत रूप से खड़ा करना चाहते हैं। सरकार उसमें जितना भी मदद कर सकती है वो करेगी, ताकि हमारे नई पीढ़ी के लोगों को देखने को भी मिले। और जैसा आपने कहा, सर्वविनाश के सामने, उन्होंने कहा कि आज इस इवेंट से मुझे नए सपने देखने की ताकत मिली है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। अगर हम लगातार इस बात को करते रहते हैं तो हमारे नए लोगों को भी, जो उनके मन में कुछ पड़ा होगा, तो उनको एक अवसर मिल सकता है और उसका एक नेटवर्किंग भी अच्छा कर सकता है। तो जो योजना को मैंने आज अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसके कुछ पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं। मुझे विश्वास है कि ये इवेंट आने वाले दिनों में भारत की युवा पीढ़ी को, भारत की टैलेंट को, भारत के लिए, मानवता के लिए कुछ न कुछ नया करने की ताकत देगी, प्रेरणा देगी। मेरी सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विश्व के अनेक भागों से जो लोग आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने आकर के सबका हौसला बुलंद किया है। और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और उसमें आप लोगों की अहम भूमिका रहने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for this very, very inspirational speech and for this unique action plan for startups. We greatly appreciate it on behalf of all the startups. So may I now request my very distinguished colleague, Professor Ashutosh Sharma, Secretary, Science and Technology, to give his vote of thanks. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji,
Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Shri Jetli ji, Minister of State, Commerce and Industry, Srimati Nirmala Sitharaman ji, Amitabh Kant, Secretary, all the stars of startups on and off the dais, ladies and gentlemen, friends. It has been an amazing day. It is actually an amazing event. There is so much energy crackling in this room that if there was any more, we would have to send it up to the grid and solve the energy problems of the country. This would be a historic occasion. 5 years down the road, 10 years down the road, when our startups of today become successful finish-ups of tomorrow, we will come here and remember this day. This is where it all began. We are, of course, grateful to the Honorable Prime Minister for setting in motion the wheel of Startup India. Sir, your vision and untiring actions have been the drivers. Your confidence in our youth as generators of knowledge and wealth is now building an enabling ecosystem for startups. We are thankful to Shri Arun Jetli ji and Srimati Nirmala Sitharaman ji for their deep commitment and wisdom conveyed in the inaugural session. Indeed, the single most powerful mantra for the success of startups is to free their energies from the clutches of over-regulation, as has been emphasized by Honorable Prime Minister. The roadmap is clear and the need is immediate. And to meet this need, Secretary Amitabh Kant and his army of officials at DIPP are working overtime in an evangelical fervor. As emphasized by Manya Pradhan Mantri ji, working in silos is not an option. I am happy that Ministry of Science and Technology is partnering with MHRD, Niti Aayog and DIPP to scale up the knowledge-driven innovation ecosystem. From the grassroots all the way to IITs, we are all massively enhancing the base of the innovation pyramid for inclusive, relevant, and frugal innovation by involving, by scouting, sourcing, and mentoring of over 1 million innovators every year from schools, from ITIs, from polytechnics, from farmers and women. That is the base of our innovation ecosystem that would multiply the numbers by many thousands. Our heartfelt thanks go also to Silicon Valley entrepreneurs, technologists, and venture capitalists for participating in this important event, sharing their important advice. A hearty appreciation to the young men and women fueling innovations and startups. My hats off to their spirit and energy. They are the real stars of the show today. They are the brightest minds converting knowledge to country's development, wealth, and societal good. I see the passion and the gleam in the eye that Shri Son talked about in the morning today. We wish each and every one of you all the very best on this exciting road ahead. Friends, this is the beginning of a remarkable journey. The launch of Startup India by our Honorable PM has provided a high-octane environment to meet the nation's aspirations. It is now for each one of us to participate in lighting 1 billion lamps. Thank you all. Live long and prosper. Copies of action plan are available outside, those of you who want to pick it up. Thank you very much. The Startup India, Stand Up India initiative launched formally today by Prime Minister Modi, generating energy and excitement here at Vigyan Bhavan, New Delhi. Dreams are taking birth all the time and assurances have been given through the launch of this initiative today. It is when the two synergize that we will truly become Stand Up India. देश में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित स्टार्टअप इंडिया अभियान का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। उम्मीद यही कि आगे आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में युवा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश और समाज कल्याण की परिकल्पना मूर्त रूप ले सकेगी।